and with your help and your team help, I'm really thankful to your team. Even Muskan and ma'am, others are free. Everyone is after us. That's the pain point that you are taking. That and my mentor. I will firstly thank very much to my mentor also, because he's been very supportive. I could not believe it. I'll say from my mouth that I could not believe that you see, saying all in this online world is easy, that we'll do this, we'll get you done for this, but actually doing it and giving it, and then also being after a person, that this is done or not, this is done or not, every week call, audit call, and every that helps a lot. Last 1.5 months I've crossed 60,000 Okay, cool, revenue interesting. in revenue. So, hello everyone, Chirag Chhabra this side, and once again, welcome to one another interview of Bizparadise Elite Achievers. So, today we have Sandeep Marwa with us, and he's a business coach, he's a business consultant. Also, he is working as a pro digital network marketer, and इन्होंने recently अपनी achievement करी है कि इन्होंने 60,000 का revenue अपने लिए क्रॉस करा है, वो भी हाई टिकट सेल्स करके। तो आज हम इनकी जर्नी से जानेंगे कि कैसे ये नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नेक्स्ट लेवल इनकम कर रहे हैं, हाई टिकट सेल्स कर रहे हैं और आगे अपने बिजनेस को और भी स्केल करते जा रहे हैं। सो I'll let him do most of the talking. So welcome Sandeep to this interview. Hi everyone, and thank you very much for the warm introduction, Chirag sir. Really blessed to be a part of your community, and I will introduce myself. I am 43 years old, married to a superwoman, and a lovely daughter, and I've been brought up in Kanpur, an old business city. So joined my parental business early, and was doing quite well. It was a joint family business. Then, due to this Corona and demonetization, I went ahead and took a long leap into this digital world, because everyone is shifting down right now or later on. So कहीं ना कहीं आके तो शिफ्ट हो ही रहे हैं लोग डिजिटल की तरफ। तो एक स्टेप ऑन था कोरोना के टाइम पे कि कुछ ढूंढा जाए, तो आई सर्च्ड इनटू two things in pro digital network marketing and digital affiliate marketing. So Okay. after trying my hands, dirtying my hands, but I got to know that if you are trying to go alone, it will be a very slow race. So I took the mentorship and this searched quite few. So I got your suggestion from many, and I saw your webinar. And I'll be truthful that no one takes decision in a one go. I've taken your 2 or 3 webinars and then took the decision to finally go Okay. through what you are teaching. And I'm really blessed that I took this, and I feel that it's a universal blessing that we are in this digital age where we can connect from anywhere and everywhere. So that is also a reason for people to get those teachers or the coaches mentorship from every coach. Was not practically possible for previous generations. Our generation is in between. you all are Exactly. you all are quite okay. You have adapted quickly. Every generation has its own advantages. We had our own, but now what is, so my focus is because the local businesses are going down. It's not, I'm not saying it is stable. Seeing the income structure and seeing the expense level, what I'm seeing is foresighting it, that it would be very hard to cope up with these kind of business for in future also. So now after getting the guidance from many others also, now I'm totally trying to get the groove of it, and with your help and your team help,
I'm really thankful to your team. Even Muskan and ma'am, others are everyone is after us. That's the pain point that you are taking. That and my mentor. I will personally thank very much to my mentor also because he's been very supportive. Though I haven't been delivering that much in the start, but he was there and he was asking me. He knew that the potential is there, but he wanted me to come out of it. The comfort zone takes over at this age and stage that okay, we'll do it. But it was not happening. Now, after seeing your videos, your training, taking your training, especially the sales role play, that's awesome. I'll suggest everyone for sure that they should look into it, that they should record the sales calls and get it done for their candidates or their team also for future. तो Thank you. आपने इससे Thank you पहले very कुछ much. ट्राई भी किया था इससे पहले आपने Sir, what have you yeah, tried earlier? I have tried many things here and there, but tried it out myself only. Then went for one or two coaches also. That is Mm-hmm. also becomes a reluctant when it does not pay off. It I won't criticize. I'm not of that nature. Also now after learning those universe that there should not be complaining. It's not everyone wants to blame, and that's an easy game of blaming. But we Yeah. do not look into our aspect of it, which I again Hmm. learned from your that alarm clock method is that when you put in your hours, it should be specific to the thing, and when you record it for every hour, then you get to know what should be the next step. We Right. are thinking that we are working very hard, very hard, very hard, but it does not become productive when you are not noting it down or not making Hmm. the exact tenure of it, that what we have done in Right. this hour and what should be done in the other. Okay. And how was your experience in Bizparadise Elite overall? Like आपका overall support के मामले में जो one to one support होता है and जो हम Elite के अंदर guys what we do is we provide 80% things done for you. So आपको जो सर्विस वाला पार्ट मिल रहा है जैसे लैंडिंग पेज आपका बनाना हो गया एड्स की डन फॉर यू चीजें हो गई तो एंड जो वन टू वन कॉल पे सपोर्ट मिलता है बिजनेस कोचेस से आपको सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट? The words are short. I'm always short on words. The praise words would be that I could not believe it. I'll say from my mouth that I could not believe that you see saying all in this online world is easy. That we'll do this, we'll get you done for this, but actually doing it and giving it, and then also being after a person that this is done or not, this is done or not. Every week call, audit call, and every that helps a lot because overall Hmm. what happens is we have done a thing but we leave it there and Right. then we'll think of after in a few days. Now we'll recall, but when someone is calling and taking a report from us, that helps a lot. Exactly. And what I believe is एक पर्सन जब बिगिनर होता है ना तो उसको सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है कि लाइक कोई Hand उसको holding to बताए गाइड somebody. करे या हैंड होल्ड करे बिकॉज व्हेन वी आर स्केलिंग जब हम एक स्केलिंग लेवल पे होते हैं तो लाइक इट्स इजी टू स्केल द थिंग्स बिकॉज वी जस्ट नीड टू थ्रो द मनी बट इन स्टार्ट वी डोंट हैव दैट मच लैक्स ऑफ रुपीज एवरी टाइम Exactly. एक Yeah, बिगिनर के पास नहीं होते सो या एंड I want to know one more thing. Like, how did you find these things different from others? Maybe जैसे आपने courses देखे होंगे and all the stuff. How do you feel कि like एक course और Bizparadise Elite में एक normal course और Bizparadise Elite में different क्या लगा? सर देखिए मैं ये कहूंगा कि एक नॉर्मल ट्रेनिंग देते हैं, कोई भी जब से ट्रेनिंग दे देता है उसमें अगर प्रैक्टिकल अप्रोचेस नहीं होती जैसे आपकी है, तो उसमें क्या होता है, एक लेथार्जिकपन या प्रोकास्टिनेशन आ जाता है, थोड़ी देर देखने के बाद Hmm. आदमी छोड़ देता है। आपके Right. क्योंकि आप टेस्ट मतलब टेस्टिंग के लिए जो आपने एक्सरसाइजेस दे रखी है नीचे, जो आपके पैम्पलेट्स हैं जो कंप्लीट करके एक Hmm. असाइनमेंट हमें देना ही देना है इस टाइम तक, वो हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि Hmm. हमें नहीं पता आप किस समय असाइनमेंट दे दोगे, किस पार्ट पे आपने वो बोला हुआ है, तो Right. उससे हमें एक्टिव रहना पड़ता है कि पूरा, और इंटरेस्टिंग भी है आपका, मतलब आपका टू द पॉइंट रहता है ज्यादातर। Hmm.
मतलब बिल्कुल टू द पॉइंट रहता है, तो लेंदी भी लगता नहीं है, उतना लेंदी नहीं लगता। अगर बाकी कोचेस का कहूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि सबका अपना एक्सप्लेन करने का वे है, ऑब्वियसली। पर अगर वो वो चीज, जैसे आज एक क्लास में हम अगर एग्जांपल दो, क्लास के में बैठे, टीचर समझा रहा है, एक टीचर बता तो जाएगा, और कंटेंट भी अच्छा ही होगा, पर राइट। उतना इंटरेस्टिंग वो बना रहा है, वो वाली बात है। आपके साथ ये है कि एग्जैक्टली। आपने उसको इंटरेस्टिंग बनाया हुआ है, तो दैट इज हेल्पिंग अ लॉट। कि मैं वही सजेस्ट बाकियों को भी कर रहा हूँ, या अपने भी उनसे कहता हूँ कि जितना आप जो चीज बोलनी है, सर हमें भी पता है क्या बोलना है, आपको भी पता है क्या बोलना है, पर जो दो राइट। कानों के अभी जैसे हमारा और आपका कम्युनिकेशन चल रहा है, तो वो क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, और जितना इंटरेस्टिंग हो पाएगा उतना अच्छा। जो आप कर रहे हो एग्जैक्टली। बहुत अच्छा। Right. All right. Got your point. Thank you so much. It really means a lot. I want to know one thing, like आपको जो स्पेसिफिक रिजल्ट आए हैं वो क्या आए हैं और कितने टाइम के अंदर अभी आपने वो रिजल्ट जनरेट करा है? So I'll be very frank in this. I was doing it before. I tried many things, but nothing was going through. Now, with the help of you and my mentor, I've sit down, I've told him everything, that this is, I've been okay. I was doing many other business also, was not getting time, but I now, after taking your guidance and his assistance, I've been pushing in through. So what is happening is the results. Okay, everyone thinks that when you are talking to your client, what our main motive normally is that we want him to be close. Money is the main objective for a start. But Hmm. now, because of your guidance, other looking into YouTube's and all, and my mentor also, that my main motive is that we are giving a good thing, our product is Hmm. good enough, and we are trying to help you. So now I've Right. shifted my motive. My motive is like yours, that we are ready to help other and Hmm. handhold them to get what they want. And still, if they feel, it's okay. And okay, money has started now flowing. Earlier, my motive was only money, money, and money. Now it's shifted Hmm. that I should be helping others, Right. and that I've learned from you also. Yeah. That you're So आपका doing your रेवेन्यू क्या best to रहा? just help. Haji, आपका रेवेन्यू क्या sorry. रहा स्पेसिफिक? Sir, last 1.5 months I've crossed 60,000 ओके, कूल, revenue इंटरेस्टिंग। in revenue. ग्रेट ग्रेट। सो जब आपको एक पर्सनल चेंज दिख रहा है, रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं, डू यू थिंक इससे आपकी स्किल्स भी इम्प्रूव हुई हैं? आपकी जो पहले स्किल थी और अब की जो स्किल्स हैं, तो क्या कौन सी स्किल्स ऐसी हैं जो आपने एनहेंस करी हैं और आपके पास आई हैं अभी? So all I'll say, everything is skill only. You think that you know everything, but it is not on the practical grounds. It is when the things like closures and all the sales skills that you have been teaching is awesome, because it's practically, you've already gone through that industry, and you know that what we were missing as a layman. So you've taught us those things, so that has हम्म। helped me immense, because high end income skills are not being taught, practically taught, as you are हम्म। teaching. I've seen people give courses for high income skill and then go away, but to revert back with every question as your Tuesdays and the hours goes in for question hour round, and you राइट। take it personally that everyone who is asking question, I salute your patience. I said it in your या। webinars also, that I salute your patience, because uh, we are as a beginner or as a newborn, we keep asking one and one thing again and again, and you still do not get irritated and still try and explain. That's a very commanding thing that I have not seen in many young coaches, but hats off to you. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। एंड सो अभी जैसे कि आपने सारी चीजें शेयर करी कि लाइक एक चीज आपने और बोली थी, रोल प्ले सेशन स्टार्टिंग में आपने बोला था। सो Yeah. लेट मी जस्ट ब्रीफ दैट गाइस फॉर यू ऑल। सो संदीप वाज सेइंग लाइक रोल प्ले इन द सेंस प्रैक्टिस, एंड एज यू नो विदाउट प्रैक्टिस नथिंग हैपेंस। सो हम जो कोई भी स्किल अगर सिखा रहे हैं, सो हमारा गोल होता है कि लाइक उसको आपको प्रैक्टिस कराई जाए, आपको रोल प्ले हो आपके साथ। तो व्हाट वी डू इज हम सेल्स प्रैक्टिस कराते हैं, एक एक पर्सन को अनम्यूट करा जाता है, देन उनको बोला जाता है कि आप लीड बनो, हम आपको क्लोज करके दिखाएंगे आप ही का प्रोडक्ट। देन वो क्लोजर बनते हैं, हम लीड। तो काइंड ऑफ एक प्रैक्टिस होती है।
कि आप अपनी लीड को वेस्ट ना करो, कि जिस भी लीड के साथ आप बात कर रहे हो आगे आपकी क्लोज हो, तो उस अकॉर्डिंग आप गाइडेंस दी जाती है. सो व्हाट वाज योर मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट संदीप विद अस टिल नाउ? Sir, I would have to really go into the memory that which moment should I leave. Right. It's a very tricky question for a person who has gone through so much. Exactly. But it's really wonderful. It's really been a wonderful journey, and I really thank you that you initiated that credit card thing. Otherwise, I was not able to arrange money on that thing. Right. But you gave the option of 3 installments and credit card option also. So I thought that okay, let's go for it. If it देखा has जाएगा to be अब a तो. loan, it would be a loan. हाँ. But हाँ. I'm really thankful that things are coming back and it's on going on track. And awesome. I'll again go back to the point that where you are asking that the question that you asked. I'll again say जो भी कर ले, सेल्स की प्रैक्टिस, ऐसी सेल्स की प्रैक्टिस कि आपको फ्रंट कैमरा में आप भागोगे, अगर सर के साथ आप आते हो आप कैमरे से छूओगे, सर नहीं छोड़ने वाले आपको. ये चीज बहुत अच्छी है सर आपकी. मतलब कि नॉर्मली क्या होता है, एक मेंटोर लेने के बाद, मतलब आपसे मेंटोरशिप लेने के बाद भी होता है कि हम लोग कैमरे से शाय होते, हम नहीं बोल रहे, पर आपका रेगुलर वो होता है कि किसका हो गया, किसका हो गया, कौन बचा है, पहले आप पीछे उसको पड़ पकड़ जाओ. लेते हो कि नहीं, करोगे कैसे नहीं. पीछे पड़ तो जाओ उनके उस. पीछे पड़ जाओ तभी आपकी वो Yeah, स्किल से वो exactly. रिजल्ट. क्योंकि डर है और कुछ नहीं है, पता उन्हें भी है, हमें भी है, सबको है. और सबको लगता है कि हमने तो बहुत सही बताया, हमने तो बता दिया, पर हम इधर उधर की बातें कर रहे थे. एग्जैक्टली जो चाहिए वो आप क्योंकि इतना कर चुके हो तो आपको पता है, हम लोग वो बात बोल ही नहीं पाते. अब आपसे देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो वो फोन पे ऑटोमेटिकली वो सबकॉन्शियस में रिकॉर्डेड है, तो वो Right. अपने आप आ जाती है. Makes क्योंकि sense, makes आपने sense. इतने उसके रोल्स प्ले करा दिए हैं कि वो अपने आप आ रही है. और अभी तो स्टार्टिंग ही है सर, आपकी और अभी तो हमारी बहुत कुछ जर्नी तो करना है. स्टार्ट ही है. या अभी तो सो बाकी है नेक्स्ट प्लान क्या है अब क्या हिट करना है, क्या अचीव करना है? सर. मैक्सिमम लेवल तो कोई नहीं हो सकता, पर ये है कि जल्दी से जल्दी 1 लाख हिट करें और उसको कंप्लीट करूं मैं. पूरी फॉर कोशिश श्योर. रहेगी कि बिफोर दिवाली आई गेट अ बोनांजा फ्रॉम यू. दिवाली फॉर बोनांजा आई विल श्योर. बी वेटिंग फ्रॉम योर साइड. फॉर श्योर, फॉर श्योर. एंड ऑफलाइन इवेंट में भी जब आपका 6 फिगर होगा, एक 6 फिगर अवार्ड भी आपको मिलेगा फॉर श्योर. लुकिंग श्योर श्योर फॉरवर्ड फॉर दैट. श्योर. बाय द वे, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. एंड आप माय आए एंड सारी चीजें करी. माय एंड गाइस, इफ यू आर समवन जो कि इस वीडियो को देख रहा है एंड those who are still thinking कि should I learn sales or leads with us or not, so like आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे फ्री वेबिनार के लिए भी रजिस्टर कर सकते हो. कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट पहले देखो, समझो सारी चीजों को, then you can take the decisions further. And if you want to know more about Sandeep and his work, we'll mention his social media links in our description box. By the way, thank you so much for watching this interview till the end.